Hello, Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. I hope you all are fine and fit at home. Class 2 students, welcome to your today's English class. I'm your teacher, Miss Mehreen Yasir. Today the date is 7th February 2022 and the day is Monday. Our today's task is on page number 61, part D, writing an important message. This homework is for both the groups. Group A will do this homework on Tuesday and Group B will do this homework on Monday. This is the page number 61. Part D, writing. Question number 1, learning to write. Look at the pictures below and list down the classroom objects. You will see some objects here. First of all, you will look at the pictures carefully and then list down the objects of classroom and write it here. आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, आप इसमें से जो भी क्लासरूम ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएंगे आप उसे यहाँ पर राइट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू विल सी द पिक्चर ऑफ चेयर. चेयर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासरूम. You will write it here. You will write the name of chair here. Okay. The next picture is blackboard. Blackboard is the classroom object. आप ब्लैक बोर्ड को या वाइट बोर्ड को वहाँ यहाँ येलो बॉक्स में राइट कर देंगे. इसके बाद आपको जो जो चीज़ें क्लासरूम ऑब्जेक्ट नज़र आ रही हैं आप उसको राइट कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेंसिल इज़ दी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासरूम. यू विल राइट इट हेयर. आप इसके नेम्स को यहाँ पर राइट कर देंगे. इसी तरह आपने जो भी आपको क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं उनके नेम्स को आपने यहाँ पर राइट कर देना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर यूजिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. You will see the first picture is the boy who is ill. You will write a sentence. The weak boy is sneezing. Weak is the describing word and sneezing is the action word. Okay, now in the picture number 2, the cute boy is painting. Cute is the describing word and painting is the action word. That's it, my dear students. Do your homework neatly. Please don't forget to write date and day on the top of the page. And don't forget to subscribe, like, and share our official YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.